Friends, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today in this video we are going to learn standard 7 social science and last video of this chapter, that is chapter number 5, India, agriculture, industry and transportation. In the earlier videos we have already completed agriculture, the types of industries. So now we are going to talk about transportation. As you know about the things and pictures, in a very first slide I have put some photographs for you. So with the help of that you can easily come to know about transportation. Now what is transportation? So to carry one thing or people from one place to another place or the goods from one place to another place, it is called transportation. मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग कोई भी चीज़ या लोग को लेके जाते हैं, so that is transportation. So you can see here the road, so we can say it is roadways, right? You can see here train, or तो we can say that railway. Then you can see here waterway, you can see steamer, you can see here airways, and here we have ropeways. So basically with the help of these photographs we come to know that basically transportation is divided into 5 ways, which are the roadways, railways, waterway, airway and ropeway. So let's discuss in detail. So first thing is that transportation in India. So roads and transportation are not only used by men to transfer goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. See, the definition is given. Roads and transportation are not only used by men to transport goods from one place to another place. Means एक place से दूसरे place पे अगर हमें goods को transport करना है, then only not we are using transportation, but to bring people nearer to each other. हमें लोगों को एक दूसरों के नज़दीक लाना है. At that time also we are using transportation. It helps in promoting the unity of the nation, and with the help of transportation we can promote unity. Unity मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, that is unity. There are roadways, airways, railways and waterways in India. Along with them, ropeways are also used. Pipelines are used to transport liquids. It's very important. We have roadways, airways, railways and waterways. And right now it is in trend, ropeways, and even pipelines are also used for transportation. So for what? So to ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स, यू नो वेरी वेल, हमारे घर पे जो गैस आता है तो उसकी गैस की पाइपलाइन होती है, वाटर की पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन. सो वी कैन से लिक्विड्स आर लाइक pipelines are used to transport the liquids. So important thing, roadways. So roadways are a unique feature of a nation and equally beneficial. Equally beneficial मतलब जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, सेम वे वी गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द रोडवेज. तो क्वेश्चन इज दैट मैम कैसे? तो ट्रांसपोर्टेशन के रोडवेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्टेशन की वो ज़्यादा होगी. सी, रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विलेजेस. सी, द इफ वी कनेक्ट द विलेजेस विद द हेल्प ऑफ रोड्स, सो डेफिनेटली वी प्रोवाइड द फैसिलिटीज़. एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, एक गांव से सिटी, सिटी से इंटरनेशनली जो भी जाना है, मीन्स एक सिटी से मेगा सिटी में जाना है, देन ऑल्सो यू कैन गो. The road web of India is the biggest one in the world. Road web, web मतलब जिसको हम झाड़ू, okay, but here we can say the group. जो रोड का ग्रुप है, इट इज़ द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा रोड वेब है. Now the types of roadways. So village road. So village road connects the village with the main city or taluka or district's main city. It's important that as far as the village roads are concerned, so they connect the village विद द मेन सिटी. जो विलेज है उसको मेन सिटी से कनेक्ट करेंगे, या तो विलेज को तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट की जो मेन सिटी है उससे कनेक्ट करेंगे. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. देन डिस्ट्रिक्ट रोड. सो द डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट्स द मेजर रीजन्स एंड सिटीज़ विद द तालुका. डिस्ट्रिक्ट है, सी विलेज है तो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट है तो तालुका से कनेक्ट करेंगे. Then we have state highway. So state highways connect the state capital with the district headquarters and important city. For example, state capital. So we have गांधीनगर. Okay. तो गांधीनगर है, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से भी वो मैच आउट होंगे एंड इवन इम्पॉर्टेंट सिटी से वो कनेक्ट करेंगे. देन वी हैव नेशनल हाईवे. सो नेशनल हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे. आपने देखा होगा कहीं NH8, NH20 लाइक दैट.
It connects one state with the another. Suppose if we are taking the example, तो गुजराती स्टेट तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, like that. Okay, national highway number 7 like that, national highway number 35 like that. So NH indicates national highway. See, we have here, it connects the main cities, ports and administrative headquarters. Administrative headquarter मतलब जहाँ से मैनेजमेंट होता है वो सारी चीज़ों से उसको कनेक्ट करेंगे. ports मतलब जहाँ पे ships loads and unloads होती है. There are approximately 50 national highways. So important highways, national highway number 7, so NH7. So it being the longest highway of India, it extend from Varanasi to Kanyakumari. Okay, means from north to south we can say. And it is the longest highway of India. So the question is there that which is considered as the longest highway of India. So national highway number 7 is considered as the longest highway of India, and it extend from Varanasi to Kanyakumari. मतलब वाराणसी के से कन्याकुमारी तक वो स्प्रेड हुआ है. Then national highway number 35. So it is the shortest highway. So don't get confused. If longest is there, so we have national highway number 7. And if we have shortest, so we have national highway number 35. So don't get confused. Longest 7, shortest 35. It connects Kolkata to Bongam, the city nearer the border of Bangladesh. बांग्लादेश की जो सिटी है वहाँ से, मतलब बॉर्डर की सिटी है वो वहाँ से कनेक्ट करती है. सो लॉन्गेस्ट 7 एंड शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, सो नेशनल हाईवे नंबर 35. देन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, मतलब उसका वर्क चल रहा है. इट विल जॉइन द मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रो सिटी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो मुंबई यू नो वेरी वेल, एज यू ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया. सो हियर वी हैव मुंबई, हियर वी हैव दिल्ली, हियर वी हैव कोलकाता एंड हियर वी हैव चेन्नई. मतलब पूरे वर्ल्ड के क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको पता ही है. ओके, दिस काइंड ऑफ शेप. सो पूरे कंट्री के हमारे जो इंडिया है वो सारे ऑलमोस्ट कंट्री से, स्टेट से ज्वाइन करेगा. सो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. सो द क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर दैट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज join which cities? So the cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. There won't be any railway crossing but 75 over bridges would be constructed. See, रेलवे क्रॉसिंग कम है बट 75 ओवर ब्रिजेस है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होंगे. कहाँ पे? तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे. देन नेक्स्ट वन इज रेलवे. सो इंडियन रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम. यू नो वेरी वेल, आपने रेलवे की पोजीशन देखी ही होती है, ऑलवेज ओवर क्राउडेड. सपोज द कैपेसिटी ऑफ लाइक वी कैन से 110 की कैपेसिटी है सपोज एक जिसमें एक में, तो वहाँ पे क्या होता है एक कंपार्टमेंट में, राइट. तो वहाँ पे नियर बाई 300 और 400 पीपल आर देयर. सो वी कैन से सो मैनी पीपल आर ट्रैवल टूगेदर एट द सेम टाइम. गुड्स इन बल्क क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर टूगेदर. आपने देखी होगी गुड्स ट्रेन. ओके, सो बल्क मीन्स इन अ ह्यूज नंबर, मतलब एक जत्थो. ओके, सो क्वांटिटी कैन बी ट्रांसपोर्ट टूगेदर. Traveling has become faster and today instead of coal, diesel or electric engines are used, and with the help of railways the traveling became faster today. And instead of coal मतलब earlier we used coal, okay, for railway engines, but right now instead of coal we are using diesel and electric engines. There are metro rails in Delhi and Kolkata. Okay, so we have the project metro rail project in Delhi and even Kolkata. Right now it is passed in Surat also. So in Surat also we will get in a future. Okay, but we can say it's outstanding project. Then waterways. So in India waterways are the most important and inexpensive mode of transportation. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन से इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है. इन इंडिया द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर पेरेनियल रिवर्स. नाउ यू नो वेरी वेल दैट वी हैव टू काइंड्स ऑफ रिवर. वन इज सीजनल रिवर एंड वन इज पेरेनियल रिवर. सो इन सीजनल रिवर ओनली इन मानसून सीजन दे हैव द वाटर, ओके, इन इट, बट इन पेरेनियल रिवर मीन्स वी कैन से throughout year they have the water. Okay, so with the if the water is like
for the whole year, so definitely we have waterways and even we can use that water for transportation. Hence steamboats, boats are used to transport passengers and goods throughout the year. Definitely if seasonal rivers are there, so it is not possible, the transportation facility is not possible. But if the rivers are perennial, so definitely throughout the whole year with the help of steamers, boats, okay, the passengers and goods throughout the year we can say we can supply. Right now you know very well Ro-Ro ferry, okay, very famous. International trade and traveling for pleasure can be carried out via waterways. See, international trade means if from India, if you want to transport anything in the abroad country, so it is possible, and for pleasure can be carried out with waterways. And traveling for pleasure, for example, I already told you Ro-Ro ferry, okay, so that is one kind of pleasure. हमें भी इच्छा होती है कि that we will feel something new, so that is also important in waterways. Then come airways. So in the present times, airways are useful to reach from one place to another place within a short span of time. Span मतलब within a short term of time, within a short time. If you want to reach from one place to another place, then you can easily reach there in a short time. Means if you choose roadways or we can say railways, so it takes much time in compared to airways. Okay, suppose सूरत से दिल्ली जाने के लिए you have to count nearby 12 to 14 hours, and same thing happen air में हम लोग जाएंगे तो within 4 hours you can reach over there. So within a short span of time, if you want to reach from one place to another place, then airways are very important. Airports are constructed for the safe take off and landing of the airports. You know very well, एयरपोर्ट जो है टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए बनाए जाते हैं. द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड थिरुवनंतपुरम. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, the international airports means we get the flight from the abroad country also. Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Thiruvananthapuram. So you have to do one thing, you have to give me the name of the international airport which is situated in Ahmedabad. You have to tell me the name of that airport which is situated in Ahmedabad. You have to give in the comment box, right? कि अहमदाबाद में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नेम क्या है. Indian Airlines provides a service for domestic travel and Air India provides a service for international. Domestic मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में ही जो प्रोवाइड होती है. फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस है, देन डिफरेंट टाइप्स आर देयर, लाइक इंडियन एयरलाइंस है, फिर जो इंडिगो है, ओके, like that we can say jet planes है, that also we are using but in private. तो इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक लेवल, मतलब हमारे ही कंट्री में. वेल एयर इंडिया है, सहारा है, दे आर प्रोवाइड द सर्विस फॉर इंटरनेशनल लेवल, राइट. Then apart from these, private airlines also functions as an important mean of travel by air. तो प्राइवेट लाइन्स जो है, तो विच आर द प्राइवेट एयरलाइंस विच यूज to travel by air, means which are the private airlines that you have to tell me. Okay, which private airlines we are using for transportation. Then comes ropeways. So in the mountain region where roads or railways cannot be constructed, then their ropeways are constructed. See what happens, especially in the mountain region where roads and railways cannot be constructed. You cannot make the roads, you cannot make the railways. So at that time the means of transportation is a ropeway. Where are the ropeways constructed in Gujarat? So you know very well, Pavagadh, Ambaji, Girnar, Abu, right, like right, so you can get the ropeways there. Ropeways are constructed at Rajgir in Bihar and in many places of Himalaya also. Okay, you have to remember Rajgir in Bihar and even many other places in Himalaya. And in Gujarat we have Pavagadh, Ambaji, Abu and Girnar में तो अभी ही start हुआ. So this is the chapter. We have completed agriculture, industry and types of transportation. Which types of transportation you have to remember? So railways, or we can say railway, roadways, then waterway and airway, and sometimes we have ropeway, right? So I hope it is clear to you. Still you have any doubts, so you can write in comment box. I'll try to solve your problems and doubts. And thank you for watching the video. Have a nice day.